Hello student, today I am teaching you English for class 5th. Our today's topic is adjectives. So, adjective means a word that tells us more about a noun. By qualifying it is called an adjective. तो adjective वो words हैं जो कि noun को qualify करता है, noun के बारे में बताता है. It tells us about its quality. उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, लाइक प्रिटी, हेल्पफुल, लार्ज, स्मॉल और येलो. एंड क्वांटिटी की अगर हम बात करें, लाइक मच और फ्यू. एंड नंबर, लाइक वन और फर्स्ट. एंड सम एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट और आस्क क्वेश्चंस अबाउट अ नाउन. नाउन के बारे में क्वेश्चंस भी करता है एडजेक्टिव. सो सम एडजेक्टिव टेल्स अस हु अ नाउन बिलोंग्स टू, और कुछ एडजेक्टिव बताते हैं कि नाउन किससे बिलोंग कर रहा है. Now adjectives can be categorized into different types. तो जो हमारे adjectives होते हैं वो different categories में divide है. I'll explain you 6 type of adjectives here. First is adjective of quality. So first of all I'll explain adjective of quality. Another one adjective of quantity, adjective of number, then interrogative adjective, demonstrative adjectives and possessive adjectives. So all these are the different categories of adjectives. So first of all, adjectives of quality. So an adjective that tells us about the quality of a noun is called an adjective of quality, जो कि noun की quality को बताता है. It describes the quality as well as the state and action of a noun. Noun कैसे एक्शन कर रहा है, इट टेल्स द एडजेक्टिव. टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन अ सेंटेंस, इट शुड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी द नाउन हैव. दिस टेल्स द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एग्जाम्पल, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. सो डेवलपिंग इज टेलिंग द क्वालिटी ऑफ अ कंट्री. देयर इज अ नॉटी चाइल्ड इन माई नेबरहुड. सो नॉटी, again the quality. Fine. Now next, adjective of quantity. Adjective of quantity. So an adjective that tells us about the quantity of a noun is called an adjective of quantity. So in which how much or how many the nouns, कितनी मात्रा में वो है, ये हमको बताता है adjective of quantity. It tells us about the amount of noun but not the exact number. वो कितना है हमें ये बताता है, उसका अमाउंट बताता है, बट एग्जैक्ट नंबर कितना है ये नहीं बताता. हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की. सो टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इन अ सेंटेंस, इट शुड आंसर द क्वेश्चंस हाउ मच. ठीक है. सो हियर द एग्जाम्पल्स. The monkey ate the whole banana. So whole means how many bananas? It is not exactly clear. So it's an adjective of quantity. I have a little interest in drawing. So little, it is not a countable. We spent a few hours at the fair. So few, how many hours? It is not mentioned. There were many students on the ground. So many, there is not a sufficient numbers count. Okay, so this is called adjective of quantity. Now adjectives of number. So an adjective that tells us about the number or position of a noun is called an adjective of a number. जिसमें adjective ये बताता है कि noun कितने कौन सी position में है, ठीक है, और उसका number बताता है. There are some adjectives that can be both adjective of a number as well as adjectives of quantity. तो इसमें कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आते हैं. जैसे मैनी, ऑल, सेवरल, लिटिल, फ्यू, मच, यही आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आते हैं जो कि क्वांटिटी बताते हैं बट एग्जैक्ट कितना है ये नहीं बताते. तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं जैसे, जो कि 2 में डिवाइड है. वन इज़ काउंटेबल नाउन्स एंड अनदर वन अनकाउंटेबल. तो काउंटेबल है जो कि नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं जो कि नंबर आप काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल आपके आ जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, जिसमें आप क्वांटिटी तो आपको पता है कि इतना है, लेकिन कितना है एग्जैक्ट नंबर नहीं पता.
So, to identify an adjective of number in the sentence, it should answer the questions how many. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का कोई सेंटेंस है तो क्वेश्चन किया जाएगा हाउ मेनी. लाइक एग्जाम्पल, देर आर 11 प्लेयर्स इन द टीम. हाउ मेनी प्लेयर्स इन द टीम? सो देर आर 11 प्लेयर्स इन द टीम. Each student must complete his or her homework. There are 12 months in a year, or there are many things to learn. So many means many, which is uncountable, and it comes in adjective of quantity. Okay. Now next, interrogative adjective. So interrogative adjectives that ask a question is called an interrogative adjectives. It modifies a noun and is used in an interrogative sentence. Okay, like which is the fresh cake? So which is not an interrogative adjective because it does not modify the noun cake, क्योंकि वो cake noun को modify नहीं कर पा रहा. So which cake is the fresh one? Here which is an interrogative adjective. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो इंटरोगेटिव एब्जेक्टिव है बिकॉज इट मॉडिफाई द नाउन केक, क्योंकि ये केक को मॉडिफाई कर रहा है. एग्जाम्पल, विच बुक विल यू बाय? एंड सेम, हुज बैग आर यू कैरिंग? व्हाट बुक आर यू रीडिंग? नाउ नेक्स्ट, demonstrative adjective. So demonstrative adjectives that points out a specific person or a thing is called a demonstrative adjective, like this, that, these, those. So this and that are used for the singular noun and these and those are used for the plural noun. Okay, for example, these chairs are made of wood. तो these ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है और आपके पास है वो चीज़ें. This computer is my father's. So here the computer is very near and only single. Fine. Now next, possessive adjective. So an adjective that tells us what a noun or pronoun owns is called a possessive adjective. कि वो own को दिखा रहा है. जैसे it modify a noun in a sentence like my, his, her, your, our, its, their are possessive adjective. इसमें जो personal pronoun है like I, तो possessive adjective हो जाएगा my, you, yours, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. So now the time of example, go and sleep in your room. So your is a possessive adjective which tells the own. Okay, the next, I went to his new house. Everyone washes their hands. The dog only wants its bone. Okay, so these all are about adjectives. Thank you and have a nice day.